If you know the answer, you know the answer. Nothing can replace that fact. Apart from this, so you need to understand when you don't know the answer, how will you going to attempt the question? So you need to like think deeper in your conscience and try to eliminate the wrong options. ठीक है, और कभी भी ये सोच के घबराना नहीं है एग्जाम में that कि I have left a lot of questions. ये भी एक कॉन्शियस होता है स्टूडेंट्स में अक्सर कि अरे मैंने तो 10-20 क्वेश्चन छोड़ दिए. Everyone is trying to attempt. Focus on what best you can do. What best you can do. Okay, always don't panic. Don't panic. Okay, so I have like made a few basic points to be kept in mind while attempting the exam. Okay, how to deal with papers. We are discussing on these points. So yes, this is important point. Suppose initial 5 to 10 question you don't know. By chance in your set, the questions came which are very difficult initially. Remain calm because panicking won't help you answer any of the remaining questions. I will share one of my experience whenever attempting the UPTU exam. क्या हुआ, initially they have given a questions from IITs, previous year IIT questions, and after that all questions were damn easy. Okay, so whenever you attempt, you don't know after these questions there may be easier questions. Important part, never panic. Never panic. Calm yourself. How will you calm yourself? Take deep breaths. ठीक है, ये ऐसे सुनने में ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है, बट इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है while attempting the exam. Take deep breath, try to calm yourself. Always try to calm yourself while attempting the questions. ठीक है, and tell yourself you can do this, and don't while comparing and doing the exams, don't compare yourself. Never do that. कि दूसरा पर्सन कितना कर रहा है, you don't know. You are just trying to give your best. ठीक है, so अपने आप को हाइड्रेट रखना है. ड्रिंक वाटर बट ज्यादा नहीं, so that every now and then you need to go to the loo, but always hydrate yourself, because जब हाइड्रेशन नहीं होता ना, मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपका माइंड का ध्यान डाइवर्ट हो. डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, है ना, कि आप your attention will divert anywhere कि यार oh, I am feeling thirsty or I am feeling sleepy. That's why you need to take a good night's sleep, just 4 to 6 hours. ज्यादा भी नहीं. If you take sleep more than 6 hours, you will feel sleepy. So take a balanced sleep so that your attention will be remain focused on the paper only. Exam में, while giving the GATE exam, for that period while you are attending the exam, your focus, you should see only the monitor screen. That's it. अगल बगल क्या हो रहा है, क्या शोर मच रहा है, your focus should not lose. ठीक है, so हाँ, this is one of the important points. Make a time plan. ठीक है, so there are suppose there are 100 questions. तो ऐसा नहीं है कि you think there are 100 questions, you need to attempt the 100 question in 120 minutes. और ये आप सिर्फ लास्ट में चेक करोगे. At that time, if you are left a lot of questions, you will start panicking. So make a time plan. What it means कि like इसको अपने माइंड में डिवाइड करो. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्पेक्टिव ऑफ 1 नंबर के क्वेश्चन है कि 2 नंबर के क्वेश्चन है, irrespective of that, just simply with the number of questions you divide. Okay, so you divide ki for the, if there is 120 minutes, so you got 30 minutes for 25 questions, or around 15 minutes for 12 questions, 12 to 13 questions. So keep checking your speed after every 15 minutes. कहीं पे 1 नंबर के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, you will
simply attempt. So you save at that point of time, you will save time. उस time saving से you will get benefit that while attempting the numerical part, you will have more time. This time plan is very important. But suppose आपका half an hour is left. अब still you are not to be able to attempt 25 questions. ये जल्दी जल्दी करना है माइंड में, इसमें बहुत सारा टाइम नहीं लगाना है. Suppose this time you are not be able to 25 questions, you are able to attempt only 20 questions. So now 80 questions are left. So divide time accordingly for that 80 question. ठीक है, ये होता है ना. अब ऐसा नहीं कि okay you are not able left with 5 questions in this 15 minutes. Then what you will do, you will cover up later. No, you will calculate the time from that point only. After 15 minutes, just mota ek time period, some lump sum time period you will have in mind. Yeah, okay, I lack in this part. And always save 5 minutes towards the end for revision. कि इसमें कई सारे wrong answer, अगर आपका mind calm होगा, you will be able to attempt. Whole thing is that while attempting the paper, keep yourself mind as calm as possible. Patience, calmness. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, आई एश्योर यू कि वो उसमें से few questions will definitely wrong. इसमें से आप you were sure कि इसमें 100% सही होगा. So पहले calmly for the first round we'll attempt those questions which we know the answer. Okay. हाँ, don't panic. No one knows complete answers, so don't get too worked up and don't mark everything. Suppose initial for 5 to 10 questions, you don't know the answer. आप पैनिक कर गए. उसके बाद even if you are able to eliminate 2 options, आपने जल्दी जल्दी you just simply start marking the answer. वो भी नहीं करना है. आपको उस for the time period of the exam, you are going to play a test match in your mind. उसी time period में. Okay. Try to make sketches. Sketches sometimes help you to remember what you have learned so far. अगर मान लो structure का question आया, simply supported. Okay, so just without thinking anything, just draw. This may help you maybe remember the formula which you have learned, or any particular method you have learned. So don't try to draw this sketch in your mind. You have space, you will get pen and paper. Draw there. So whenever a sketch is needed, use the rough sheet. One more thing, apart from this, don't start writing everything. Okay, ये मैंने क्लास में भी कई बार बताया कि always try to solve the questions towards the end. At each point of time, don't do the calculations. Towards the end, do the calculation. Only use the calculator wherever it is necessary for you, because you are going to get the gate calculator. Gate calculator की आप थोड़ी सी practice कर लो. Just type the gate calculator on the Google, you will get the gate calculator. ठीक है? हाँ. Sometimes students may get confused whether this is shear force or bending moment. If the value is given, ठीक है? So focus on the dimension. While studying, पढ़ते समय ना, just make a note कि bending moment has this dimension, shear force has this dimension, stress is this dimension. अगर आपको dimension भी if have back in mind ना, you will be able to attempt. Sometimes question may be solved by dimension matching. It's one of the way to solve the question. ठीक है? Suppose in the numerical 3 values are given. One is watt per meter square, another is watt, and you are asked to find out the area. So by this dimension matching, you will be able to solve the answer. Focus on that part too. Okay. Okay. So in general questions, it covers a wide range of topics. होता है ना? Like sometimes like the questions like biodiversity.
है ना? Like for example, like the questions of Kyoto Protocol is a previous year gate question. So Kyoto Protocol is related to. So you have to like tick which question has explicitly asked directly. जब भी जनरल क्वेश्चंस आए, डोंट गेट टू वर्कड अप इन द सॉल्यूशंस. डायरेक्टली जो कह रहा है ना क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस. दो इंक्रीज इन ग्रीन हाउस एज गैसेस विल लाइकली टू अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. इसमें इतना जाके डीप नहीं सोचना है कि वो बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट करेगा, देन इट विल आल्सो अफेक्ट द सस्टेनेबिलिटी. इन जनरल क्वेश्चंस जस्ट फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन हैज explicitly asked, directly asked, related to. Okay. Then how to attempt the paper to reduce your negative marking. So you have to attempt the paper in 3 rounds. As simple as this. That 3 rounds. Why 3 rounds? To make yourself mind calm. अगर आप पहले राउंड में you will be able to attempt few questions, आपको अपने आप ही माइंड में calmness मिलेगी कि I am not going to fail in this exam, or at least I am worth enough to I have attempted certain questions. ठीक है. So for the first round, mark those only which you know the perfect answer. कि हाँ 100% surety according to you कि हाँ this is the right answer. But the fact is that जो आपने 100% के साथ ही मार्क किया ना, उसमें चांस ऑफ एक्यूरेसी ओनली 95% होगी. एक दो क्वेश्चन उसमें से भी आपकी गलत होंगे. कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला which you are trying to recollect, you are sure you are able to recollect 100% correct that formula, बट उस फॉर्मूले में कुछ 1 to power 2/3 की जगह 1/3 लिखा था और आपने जल्दी में मार्क कर दिया, तो एक दो क्वेश्चन करेक्ट होंगे. बट एटलीस्ट दिस क्वेश्चन विल फेच यू अ गुड मार्क्स, फेच यू गुड मार्क्स. Okay, these questions will fetch you a very good marks. तो पहला राउंड, मेंटेन योर calmness and try to attempt. निश्चित आपको जरा सा भी किसी क्वेश्चन में शक लगे, लीव दैट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट राउंड. उसमें आपको उसी समय बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है. दिस वे two things will be there. One, you will be able to mark the questions which you have attempted with 100% surety. Second thing, आप पूरे पेपर को एक बार go through कर चुके होंगे. ठीक है. After going through, you know कि there are certain questions, अगर मैं उस पे if you focus little bit more on those questions, I will be able to attempt more. ठीक है. So first question with 100% surety, mark those questions green, correct. Okay. And important point is that don't push yourself too much for getting the correct answer in this round. अरे ये तो मैंने बस कल रात पढ़ा था, I'm just trying to recollect, I just remember, I just read it last night. Whatever it is, even if you have studied last night, now you are not 100% sure. तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम फर्स्ट राउंड में वेस्ट नहीं करना है. Just mark green, move ahead. अगर आपको आता है, नहीं आता है, लीव द क्वेश्चन. अगर किसी क्वेश्चन के लिए आपको फिर भी लगता है it is with 100% surety, mark the answer and mark it for review, so that in the panel you have an idea कि हाँ this question I have more clarity. If I try to dig into my conscience, I may be able to get the right answer. But कुछ पूछना किसी को? Radhika, you want to ask anything? Okay. No, sir. Okay. So for the first round, just attempt those questions which you are for 100% surety, and which you are for 80% surety, mark the answer and mark it for review, so that while reviewing it again, you know these are those questions for which you need to dig more into your conscience, more into your subconscious mind, more in focus on your studies, recollect your studies. Don't mark the answer and just mark for review for those questions which you have 50% surety. आपको लग रहा है कि शायद आपको याद आ जाए. And these are the risky questions. And if you don't know anything about the question, just don't mark anything. एग्जाम में तुक्के नहीं लगते.
इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपका किसी एक क्वेश्चन में तुक्का लगेगा एंड उसके बदले 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो तुक्के एग्जाम में नहीं लगते। सो इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, just don't attempt. So after your first round, you will have a fair idea कि how many questions you have attempted with surety. Okay, so round 2 will be a, now after the first round risk started. After the first round your risk started. This round will be a risky round, though you will see only those questions which you have marked with 80% surety. Okay, so this is a less risky round because there is a higher chance of this round your question to be correct. See, अगर आपका एक क्वेश्चन भी करेक्ट होता है तो उसके बदले आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, स्टिल आपका नेट लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपके 2 करेक्ट हो जाते हैं, यू विल बी इनटू पॉजिटिव साइड। तो यू नीड टू first see those questions which are marked and marked for review. Now just try to think harder on each question in which you can eliminate 80% 2 options with 100% surety. अब आपको 2 में से एक चुनना है, A, B, C, D. So you are able to eliminate B and D. Now you need to choose A and C. And now आपको बहुत लग रहा है कि C will be the right answer, and you have attempted less number of questions in the first round. Obviously अगर आपने फर्स्ट राउंड में से 100 में से you have obviously there are 65 questions, no? 65 में से you have attempted 40 questions correctly. You are sure. You don't need to take any risk. है ना? But if you are not able to attempt these questions with surety, then you need to take the risk. So this is a little bit risky round, but less risky round because you are 80% sure of the answer. So this round will fetch you some marks. And after this round, okay, after this round also count the questions. Okay, and after this round, again count the questions which you have attempted. Take into consideration those questions which you have marked in first round as well as in second round. So even if you take, you will the number of questions you have marked in this round, and this will mark you. Suppose 50% of these questions are right, still they will give you positive marks. समझ रहे हैं? Because negative marking is only minus 1/3 of that question. तो आपके अगर 50% क्वेश्चन इस राउंड में सही होते हैं, this will definitely going to give you positive marks. And third one is the riskiest round. तो इस राउंड को अगर आपने फेयर, ये राउंड 2 लोगों के लिए है, मतलब 2 लोगों को कॉन्शियस में रखना है। जिसने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए इन द फर्स्ट एंड द सेकंड राउंड, ही नीड नॉट टू गो फॉर द थर्ड राउंड। ठीक है, जिसने मतलब जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, ऑन द गुड साइड, हायर साइड, नीड नॉट टू गो फॉर द थर्ड राउंड। जिसने मिडिल क्वेश्चंस किए हैं, जिसने ऑलमोस्ट मिडिल में किए हैं, you know you are going to qualify the gate but you are not going to get the good marks, you need to take a few risks in this round. but जिसने कुछ नहीं किया, you need to take a lot of risk in this round, क्योंकि you know कि without taking the risk you are not going to qualify. अब रिस्क का मतलब यही है कि रिस्क may lead to disaster और may lead to success, but ये प्योर तुक्का नहीं है, it is a calculative risk. We said it is a calculative risk. It is not a pure tukka, pure guesswork. Because you have at least thought about these questions, you have certain idea of these questions. But you don't have much of a choice at this point, and hence you need to take the calculative risk. Okay, attempt only those questions for which you will be able to eliminate at least one option. And that too with 100% surety. There are 4 options, A, B, C, D. You know, D is not at all related to this topic. Now you need to choose between A, C, and D.
बहुत रिस्की राउंड है, और जिसका तो कुछ नहीं पता, मतलब दोस क्वेश्चन विच यू हैव नो आइडिया, उसको सिंपली छोड़ देना है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से सपोज देयर इज सम इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, यू हैव नेवर रेड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट लीव इट, because nobody is going to get 100 marks in these questions, 100 out of 100. Okay, so these are the general cutoffs of the previous year gate exams. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की बेसिस पे आई फाइंड कि आईआईटी खड़गपुर ने सबसे डिफिकल्ट पेपर बनाया था, दो इट इज नॉट नेसेसरी कि इस साल भी वो सबसे डिफिकल्ट पेपर बनाए, बट अगर प्रीवियस इन द प्रीवियस ईयर इन 2014 से डिफिकल्ट पेपर बनाया है, तो पेपर में भी डिफिकल्ट एंड कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। ठीक है, बट एग्जाम देते समय ना आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना ज्यादा, बिकॉज while attempting you will have a fair idea कि what is the level of this question paper। उस समय आपको ये गेस नहीं करना कि ओके आई हैव अटेम्प्टेड 35 अराउंड 35 मार्क्स करेक्टली, सो आई विल बी एबल टू जस्ट क्वालिफाई द गेट। आपको नहीं पता, उस साल हो सकता है कि पेपर वुड बी इजियर देन द प्रीवियस इयर्स, बट एक मोटा मोटा आइडिया रखना है कि सी हाईएस्ट मार्क्स अराउंड कट ऑफ मार्क्स अराउंड 45 गए, so if you are able to attempt कि हाँ I am 45, so in mind you will get a little calmness कि okay I am going to qualify get this year, पेपर देते पता लग जाता है। ठीक है, and see the highest marks is going around nearby 80, sometimes paper is difficult, but only this year the highest marks is also very low। I have qualified gate in this year, I got all India rank 5 and my marks were 73। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स पे बहुत वेरिएशन होता है, and after value coming down the variation started decreasing, so फिर 0.1 0.2 के वेरिएशन आते हैं नियर बाय द कट ऑफ। तो एक मार्क्स मैट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की है, बट इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सपोज एक प्रीवियस ईयर में यू गेट 32.5 मार्क्स, 32.5 मार्क्स फॉर यू टू क्वालिफाई द गेट एग्जाम, so either you attempt 35 1 marks questions correctly, you will be able to qualify, or 16 1 mark questions and 9 2 marks question, you will be able to qualify। एग्जाम में प्लीज फोकस ऑन हायर मार्क्स क्वेश्चंस टू बी श्योर टू बी करेक्ट। क्यों? जो न्यूमेरिकल होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, वन थिंग इज दैट्स अ गुड थिंग, और दे विल फेच यू मोर मार्क्स। उनको बहुत कामली सॉल्व करना है, एंड डोंट डू एनी सिली और कैलकुलेटिव मिस्टेक्स इन दोस क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको नहीं पता है, आपको प्योर तुक्का मारना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू नो द मेथड, try to solve it patiently because they will give you good marks। और 2012 में मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे जितने भी गलत हुए वो सब एक नंबर के क्वेश्चन ही गलत हुए, दो नंबर के सारे सही हुए, that that fetch me the good marks। इस तरह आपको एक बेसिक आइडिया बनाना पड़ेगा फॉर द कट ऑफ मार्क्स एज वेल एज फॉर द हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स तो छोड़ दो, हाईएस्ट मार्क्स तो आप जितने ज्यादा सही अटेम्प्ट कर पाओ दैट्स बेटर, just apply the method of first round, second round, third round। These method will help you to minimize your risk for the negative marking and maximize your score। ठीक है, and lastly some of the tips and tricks। See,
the if there is a multiplicity of number or words in the options, highly likely chances are that word or number is among the correct answer. अब इसका मेरे पास अभी एग्जांपल रेडी नहीं है, बट थिंक देयर आर 4 ऑप्शंस, ठीक है, और उसमें देयर आर particularly one word which is continuously repeating in 3 options. तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये whatever be the correct answer इन तीनों में से कोई है कि you will be able to eliminate one, though it's a probability, but ये it is proven in around 90% of the questions which I have attempted so far in my life. 90% of the questions are have a highly likely chances कि जिसमें नंबर पर्टिकुलरली नंबर या पर्टिकुलरली कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तीन ऑप्शंस में, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो भी सोचेगा ना कि लेट्स कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, तो आपको ढूंढना है आपदा में अफसर। अगर उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाया तो आप उन वर्ड्स को पकड़ के अपने कॉन्शियस में ढूंढने की कोशिश करो आंसर। एंड एब्सोल्यूट्स वर्ड लाइक ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज हैपन एंड ओनली, नेवर आर वेरी लेस लाइकली टू बी करेक्ट। इसलिए कहते हैं जिन ऑप्शंस में ऑल 3 आर करेक्ट, जनरली वो सही होते हैं, नॉट नेसेसरी, जनरली वो सही होते हैं। इसलिए ऑल द अबव आर यूजुअली करेक्ट व्हाइल नन ऑफ द अबव आर यूजुअली इनकरेक्ट। ठीक है, हाँ, ये मैं क्लास में भी बताया ये पॉइंट मैंने। फोकस ऑन द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, बल्कि पेन ओके स्क्रीन पे है तो जस्ट राइट इट। ओके, while doing the structures question, modulus of elasticity is given. Okay, radius of curvature is given, bending moment is given, you need to calculate the moment of inertia. Okay, you will have if you start writing the terms like this, you will have a fair idea. आप क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे, that will consume time. तो पहली बार में when you are studying the questions, just write the keyword, और like अगर वो formula based है तो बस उसके एक single word E R, radius of curvature is given. So that will help you to eliminate few questions and that will increase your speed to solve the questions. हाँ, for attempting match the column type of questions, focus on the options first. Match the column देखते ही सीधे मत टूट पड़ना कि okay start matching, क्योंकि कभी कभी if you know कि हाँ this I know for particularly one options, like if you know for 100% surety this is correct, start looking this in the options. You may be able to eliminate 1 or 2 options, then start matching. उससे क्या फायदा होगा? At certain point you will be able to realize कि suppose you don't know about this topic, but you are that sure कि this topic is related to landscape, and in one option this topic is matching to this, in another option this topic is matching to this. This is not at all related to landscape. So you will have idea, okay, this will be perfectly the right answer. So for the match the column questions, look at the options, practice a lot of mock test or questions, clear your doubts. अपने आप से एक बार एग्जाम से सुबह सुबह कह लेना कि जो टॉपिक या क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आते, the topics and questions which I don't know, that is not going to come in the exam. Because if you go in the exams with a doubt in your mind, you will start questioning yourself while attempting the paper. So while attempting the paper, your focus should be only to attempt. कुछ और नहीं सोचना है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, किसी के भी बारे में कि मेरी फैमिली में ये हो गया, या आई एम गोइंग टू मीट माय फादर टुडे, और माय बॉयफ्रेंड टुडे, माय गर्लफ्रेंड टुडे, कुछ नहीं, ओनली अटेम्प्टिंग द पेपर, दैट्स इट। वो 2 घंटे आपके पास उस पेपर ने आपसे छीन लिए। नाउ योर ओनली ड्यूटी इज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विथ 100% फोकस। बिलीव मी, अगर आप 100% फोकस से करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाओगे।